Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Hope everyone's weekend was good. And month has started newly. So new day. सभी लोगों को ट्रेड तो मिल गया सुबह में. वो छोड़ के एनालिसिस के ऊपर ध्यान देते हुए. Hope everyone has captured that trade from the group. कोई भी डाउट्स है पूछ लो. We'll start the streaming in 2 minutes. Good morning, Suresh ji. Good morning, Varun. Good morning, Visma. Is close to 80 pips. Okay. पहली बार अच्छा न्यूज़ सुना है क्लोज किया करके. किसी को भी जो भी डाउट्स है पूछ लेना. विल स्टार्ट इन 2 minutes. सर विच ट्रेड? लॉन्ग. 2 trades were allotted today in position of first intact level. ये वाला ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन था. 22 पे एग्जीक्यूट हुई है. ग्रुप में था उसमें. शॉर्ट देख रहे हो क्या भाई? इंटैक्ट पेंडिंग है यार. बिना इंटैक्ट के कैसे लोगे? यहाँ पे देखो ना. क्लियर कट मार्केट इंटैक्ट कंप्लीट नहीं किया अभी तक. अगर इंटैक्ट करेगा, कन्वर्जन दिखाएगा तब देखेंगे ना. अगर मेरे को यहाँ से ही कहीं से नीचे के लिए शॉर्ट के लिए बैठना है तो मेरे को यहाँ पे सेटअप तो देने दो मार्केट. सरप्लस 150 मिनिमलिटी से रिजेक्शन तो दिखा है, नो डाउट. राइट. इन पर्सपेक्टिव ऑफ वॉल्यूम भी साथ में है. ये नोटिस करो ना, यहाँ पे इंटैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग है. राइट. सो आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद स्क्रीनिंग गाइस. गुड मॉर्निंग रितेश. गुड मॉर्निंग श्रेयस. Right. What are the three major things that you have to focus on today's scenario to perceive and be in the directions of the market? First thing, high volume allocations. किस वॉल्यूम के हिसाब से आज का हाई वॉल्यूम आपको एनालाइजेशन पे रखना होगा? टू थिंग्स जो आपको फॉलो थ्रू में रहना है. फ्राइडे के दिन की शॉर्ट ट्रेड होने के बाद जो मूवमेंट आया है लॉन्ग के लिए, राइट, entire movement was in iceberg zone, right? So post iceberg zone, what did market tend to do? Market tend to create a high volume of first candle allocation जो कि थी यहाँ पे, जो न्यूज कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू पे आएगी. राइट. सो उसके बाद सेकेंड अलोकेशन जो है
वो आके ये वाला मूवमेंट एक्शन प्लान है जो कि इन डायरेक्शन में ही दिखा रहा था, क्योंकि टीटीएस 2.0 टारगेट हिट नहीं हुई थी, जो फर्स्ट गोल्डन रेशियो टारगेट आके यहाँ पे था, वो वाला, right? So henceforth the rejection was in continued in the same direction of the market till the new targets, right? So ये नया टारगेट अलॉट होने के बाद स्लो एंड स्टडी फ्राइडे की इवनिंग सेशन में हम उतना ट्रेड्स अलॉट नहीं करते। आज के दिन में क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन की, राइट? सो दिस वाज द गैप अप ओपनिंग कैंडल। गैप अप ओपनिंग कैंडल करने के बाद बाइंग प्रेशर। सो बाइंग प्रेशर होने के बाद what do you notice? Do we have any selling pressure in 1 hour at the current scenario? No, right? जब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं होगा 1 आवर में, ट्रेड ऑफ एक्शंस विल नॉट बी कंसिडर्ड टुवर्ड्स द शॉर्ट, राइट? सो फर्स्ट सिनेरियो वो हो गया। सेकंड सिनेरियो, हाई वॉल्यूम ऑफ एग्जीक्यूशन, रिजेक्शन क्यों लिया? फिर से एग्जैक्टली सरप्लस 150% वॉल्यूम डेवलपमेंट होने के बाद इंटैक्ट कंप्लीट करना था, करेक्ट? सो ये इंटैक्ट कंप्लीट करने के लिए मार्केट नीचे आया, राइट? कीपिंग इन माइंड हमारे पास 1 आवर में एक एलजी है जो कि फ्राइडे के मूवमेंट का है, वो कवर करना है, तो हमको 15 मिनट का मेजर इंटैक्ट कवर करना ही पड़ेगा। अगर वो इंटैक्ट लेवल कंप्लीट होती है तब जाके अलोकेशन के साथ शॉर्ट के लिए देखेंगे टिल 4180 वाला एलजी पॉइंट, ओके? If that intact is not taken and if there is no selling pressure allotted in 1 hour, we'll not be looking towards the short. हर एक ट्रेड कैरी फॉरवर्ड में ही होगी, कोई भी ट्रेड हम शॉर्ट के लिए कन्वर्जन में नहीं रखेंगे। Are we clear in this perspective? उसके बाद what are the next major things that needs to be focused in today's scenario? Scenario number 1, अगर हमको ये वाला जो कैंडल है नेक्स्ट 15 मिनट्स, ये कैंडल यहाँ पे ही क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल S2B1 के साथ ऊपर के लिए आता है, वेल एंड गुड, ट्रेड में बने रहेंगे एड ऑन करके। इफ इट डजंट क्रिएट अ सिनेरियो ऑफ दैट, व्हाट यू विल बी डूइंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अलोकेशन ऑफ सप्लाई will be replayed at this stage, राइट? सो ये स्टेजिंग के साथ अगर ब्रेक नहीं होता है, रिजेक्शन लेता है 100% या 150% से, एंड सेटअप क्रिएट होती है, तभी ही जाके नेक्स्ट प्लान ऑफ एग्जीक्यूशंस विल बी टेकन अंडर द कंसिडरेशंस, नॉट प्रायर टू दैट। ओके एवरीवन, सो विद दिस प्लान ऑफ executions, what are the next movement? Three things to be kept in mind for today, that is daily time frame पे इंटैक्ट पेंडिंग है जो कि ये वाला है, right? So this overall intact movement is pending, right? अगर इसमें से 50% ऑफ द कवरेंस भी चाहिए हमें, जो कि 4180 तक की जो एलजी पॉइंट है, वो एलजी पॉइंट भी कवरेंस चाहिए, तो हमें यहाँ पे मेजर रोल क्या प्ले करना चाहिए? यहाँ पे मेजर रोल रिजेक्शन दिखना चाहिए। बाय लंदन सेशन इफ दिस क्लोजेस समवेयर अराउंड लाइक 4218 के आजू बाजू में, तब जाके we will get one nice lookout towards a short, not prior to that, right? उसके लिए वन एंड ओनली मेजर थिंग आप लोगों को फॉलो करके चलना है, 1 आवर में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने दो। अगर 1 आवर में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, डायरेक्शन में बने रहो। क्लियर गाइस? तब तक के लिए डायरेक्शन इज स्टिल बुलिश। फर्स्ट ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन का ही है, सेकंड ट्रेड अगर क्रिएट होता है देन वी विल लुक इनटू इट, नॉट प्रायर टू दैट। Any doubts? Good morning, Shrikant. I watched your weekend analysis, what you have done. Timeline ज़्यादा है, Shrikant. You have to reduce it. 11 minutes continuously working on it.
appreciated the effort, but it has to come down to 8 minutes. Okay, Shrikant? If it doesn't, then we have to implement the new trade. So we'll look in 15 minutes or 1 hour selling pressure. 1 hour, Surajji. Notice 1 hour. What is 1 hour doing at the current stage? राइट सो आज के दिन में फ्राइडे का जो शॉर्ट ट्रेड है उसके बाद मार्केट पूरा बाइंग प्रेशर के साइड ही है करेक्ट तो फर्स्ट सेलिंग प्रेशर अलोकेशन कहाँ पे हुआ था at this point of action wherein it was indecisive hence surplus 100% break करके continuity में आज closure दिया है करेक्ट अगर हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डेवलप होना है देन व्हाट इज द वन मेजर थिंग करेंटली भी बाइंग में ही है सेलिंग आना है तो ये इंटैक्ट के पास आके विक क्रिएशन दिखाना है अगर वो दिखता है डेफिनेटली विल लुक फॉर वन ऑफ द होल्डिंग शॉट्स नहीं तो आईडी ट्रेड में जितना मिलता है उतने में खुश रहना पड़ेगा सुरेश जी ओके श्योर सर आई विल मेक इट 8 minutes डन सुरेश जी आपका भी स्क्रीनिंग नहीं आया है राइट प्लीज share the timeline as per the execution. Okay, long at 35 एग्जैक्ट नंबर बता दियो बी केयरफुल यू हैव एंटर्ड एट ए वेरी रॉन्ग स्टेज फर्स्ट ट्रेड ग्रीन में क्लोज करके सेकंड ट्रेड लाल में क्लोज करने की आदत जो है कर दो एस टू बी वन बोले थे ना हाँ एस टू बी वन के लिए सेटअप भी तो फॉर्म होना चाहिए ना कन्वर्जन कहाँ पे दिखाया है यहाँ पे अभी भी लाल में ही है हाँ नॉट इंटरेस्टेड सी ऑलवेज वेट right executions with the right perseverance you will get at a right direction okay हरी क्यों कर रहे हो 15 minutes में तो सेलिंग दिखा रहा है ना विक क्रिएशंस को आइडेंटिफाई करो राइट एक बाइंग के साइड रेस्ट ऑल इज टुवर्ड सेलिंग साइड राइट सो मार्केट 200 तक आ सकती है 150 से रिजेक्शन जो दिख रहा है ना एक ट्रैप फ्री आउट कर सकता है हाँ कन्वर्ट होता है तो वेल एंड गुड फॉर यू
बट बिना सेटअप फॉर्मेशन का एग्जीक्यूशन इज लाइक गिविंग योर हैंड इन द माउथ ऑफ ड्रैगन्स. आओ खा लो. सर 1 आवर के हिसाब से लॉन्ग कर सकते हैं. हाँ 1 आवर के हिसाब से कर सकते हैं. अगर 1 आवर के हिसाब से आप देख रहे हो तो स्विंग में रहना, आईडी में मत हो. यूट्यूब फैमिली मेंबर्स जो भी डाउट्स है प्लीज डू आस्क. सेम मूवमेंट एक्शन प्लान विल बी हैविंग फॉर कमिंग 2 मंथ्स. एक महीना खत्म हो चुका है नवंबर. सो दिसंबर एंड जनवरी कितना छापना है छाप लो. उसके बाद अगेन विल बी बैक इनटू द सेम जोन ऑफ 200 pips. गुड मॉर्निंग अंबिका. एमटीएसएल मूव करो ना. ये एमटीएस यहाँ पे रख. What was the reason of the fall? See, there are two reasons. एक अचानक से गोल्ड रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आई. उसी टाइम पे सीएमई डेटा ब्लॉक हो गया सर्वर ग्लिच के वजह से. So with both the certainties, the drop of 500 pips were there in the allocation. सेटअप के साथ ही तो गिरा है. फ्राइडे के जाके स्ट्रीमिंग देख लेना. एग्जीक्यूशन यहाँ पे थी, राइट? उसके साथ ही तो गिरा है. वरुण का ट्रेड यहाँ पे क्लोज हुआ था. इस ग्रीन कैंडल एमटीएस से लेकर. हाँ फिर से भी तो एग्जीक्यूशन मिला. पीपल टू ना इधर इस टू बी वन के. श्रीकांत कितना पिप्स कैप्चर किया था इस मोमेंट में?
Friday movement, first trade closed at 55 pips and second trade with the same direction and setup 210 pips. Okay. Took the trade again and captured 250 pips. Okay. Great case. So इस कैंडल में आपको 55 पिप्स में आउट किया था, करेक्ट? कोई नहीं, मूवमेंट फास्ट थी, होता है. Stream will be there for next 30 minutes. जो भी doubts है पूछ लो. No hesitations. Yes, sir. I wonder that my TP was 300 pips but exited at 555 pips. Can we consider this as a three-wing setup? Three-wing setup यहाँ पे बना ही नहीं है. It's 2v1 setup है, उतना ही. 4244 क्रॉस होने दो तभी नेक्स्ट इंटैक्ट तक आएगा वो. उससे पहले वो इसी जोन में खेलता रहेगा थोड़ा देर. तो फोमो में जितने भी लोगों को बिठाना है वो बिठा चुका है. सर आप कितने वेब्स डेली कैप्चर करते हैं? डिपेंड करता है, मूड कैसा है. न्यू 1 आवर कैंडल गाइस. सो दोनों कैंडल में बाइंग प्रेशर है, राइट? This candle is not having a wick towards the top in 1 hour. So this should preserve an action plan in the direction only, rejection के साथ, till the intact तक आना ही चाहिए at any cost. तब तक मैं शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, रनिंग में भी नहीं, किसी में भी नहीं. रिजेक्शन दिखाता है तो यस डेफिनेटली आई विल बी इंटरेस्टेड, नॉट प्रायर टू दैट. ओके. गुड मॉर्निंग नीलेश, हाउ वाज योर वीकेंड? नहीं देखेंगे, पूरा दिन है, अभी तो 9:30 हुआ है. बंद तो दो. ये लॉन्ग में हो क्या? नहीं अभी तक नहीं, क्योंकि प्रीवियस कैंडल 15 मिनट का था एंड 1 आवर के लिए भी 15 मिनट ही चाहिए था, तो हेंस फोर्थ नो. यहाँ पे कहीं पे दिखाएगा तो देखेंगे. इट वाज फाइन. ओके.
Hope everyone recovered and all your hospital stuff has been cleared, Nitesh. If minimality is formed and price goes above 200% and continues, then what we should allocate current surplus or previous 1 hour surplus? See, if there is a rejection perspective, then surplus will be the first option, right? If there is no rejection at 200% and it has given a break directly, then you will be looking for 1 hour allocation. Okay, Nilesh? So in this case, if you want to look at an action plan, right? इस point of action में minimality थी, right? Rejection था 200% पे. Henceforth, marking could be in the surplus action plan from this point of action till this point of action, right? But in the previous scenario, same point, यहाँ पे अगर notice कर रहे हो 100% break and continue 200%. Now 150 के पास rejection है, now 200 के पास rejection है, right? In this persona, what you will have to do, you will have to take an action plan which is considered in pursuance of 1 hour. ठीक है? ग्लिच भी आपका डिमांड पे ही रुका. कौन सा ग्लिच? सीएमई डेटा. सीएमई डेटा नहीं है, सीएमई एक ग्रुप है जहां से फीड आती है. Algorithm works on a same basis. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के परफॉर्मेंस में जो भी अलोकेटिंग पॉइंट में आता है वही अलोकेटिंग पॉइंट से रिजेक्शन दिखाएगा. उससे पहले ना उसके बाद. भाई बहस करने के मूड में नहीं हूँ. तुम्हारे वजह से जो कल पार्टी हुई है उसका हैंगओवर अभी तक है. देख ले, गलत हुआ तो बता दूंगा. एनालिसिस सही है तेरा तो चलेगा, बने रहो. Okay, so the rejection has to be near 150 and 200%. That's right, Nilesh. अगर rejection नहीं है ना, then you won't be able to allocate the structure in pursuance of surplus. It will be a normal supply which you will be mapping, no? Normal supply map करना है तो it's very easy to map. जो भी previous supply है उसे लेके current supply में map करना.
छोटा टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करो भाई। अगर ये मूवमेंट तुम 5 मिनट या 1 मिनट में देखोगे ना, पागल हो जाओ। लो तुम्हारे लिए दिखा भी देता हूँ। खेलते रहो, ऊपर से विक, नीचे से विक, ऊपर से विक, नीचे से। So this is not the right way to look into the markets here. 15 मिनट में जो क्लैरिटी एंड एग्जीक्यूशन पॉइंट दिखेगा ना, वो 5 मिनट में नहीं मिलेगा, राइट? रिटेलर्स प्रेसिडेंस बताता हूँ, देख ले। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक शॉर्ट की तरफ, फर्स्ट ट्रेड ऑफ एक्शन प्लान, ओके। उसके बाद इधर से फिब लेवल डालो, 0.3 रिजेक्शन, 0.6 रिजेक्शन, ओके, सेकेंड ट्रैप। थर्ड ट्रैप एक्शन पॉइंट, एम पैटर्न, right? So these are the few things that you should always be very careful. But 15 मिनट में देखो ना, it's clear cut. Still the indication is on pursuance of buying side. So why do you want to trade in 5 minutes? Vision clarity मिलती है। हाँ, अरुंधति उसको भी पिला दो नींबू पानी। नहीं नहीं अंबिका, सिर्फ डिमांड एलोकेशन गलत हुआ है, दूसरा सब सही है। मैप कर लो फिर से। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लो ना, आप डायरेक्टली सेकंड सर्विंग क्यों ले रहे हो? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का तो कंप्लीट होने दो। सो डायरेक्ट मैपिंग ये क्यों लिया है? आज का दिन का लो ना, ये वाला। सो दिस विल बी योर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैपिंग। Is it necessary that the intact area should get covered completely? In what conditions we accept it not to cover completely? See, if the movement is big, right? So definitely with the intact only market will fall through, right? इतना confidently सुबह में trade off execution क्यों दिया था? Nilesh, you are also part of that group, right? Because target है सामने, right? Intact pending था, जैसे ही intact हुआ execution. Second reason, 1 hour. 1 hour में अगर notice करोगे, the trade of execution was in a propaganda of intact. Where was that intact? This point, right? So that's how you look into the preservance and execute, no? Keeping in mind there is a LG point over here and there is a small intact. Definitely वो लेगा. But कब? जब 15 मिनट में अगर इंटैक्ट के साथ वॉल्यूम डेवलपमेंट दिखती है, उसके बाद वॉल्यूम स्टेबली आइसबर्ग जोन में आती है, तब तक नहीं, तब तक लॉन्ग में बने रहो, राइट? एज सिंपल एज दैट। कोई तो बोल रहा था बैंगलोर में कश्मीर के जैसे फील आ रही है। बैंगलोर में कश्मीर के जैसे फील आ रही है। यस महेश, गुड। गाइस स्ट्रीमिंग विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, जो भी डाउट्स है प्लीज डू आस्क। एंड एक चीज गाइस, when the market is in the direction, एक ही चीज ध्यान में रखना होगा आप लोगों को,
कि स्लीपेज में पैसे उड़ाओ मत, ठीक है। उसके लिए बोलते हैं S2B1 फॉलो करो, नहीं तो इंटैक्ट फॉलो करो। रनिंग में बैठोगे ना, द फ्लक्चुएशन पर कैंडल इज अबाउट 30-40 पिप्स ऊपर नीचे, राइट। सो आपका डायरेक्शन सही होगा, बट 40 पिप्स हमारा एसएल है, लंदन न्यूयॉर्क का। एशियन का तो 30 पिप्स का है, राइट। सो इन दैट परसुवेंस अगर रनिंग में बैठ रहे हो तो डेफिनेटली एसएल विल नॉट मैच, एंड व्हेन एसएल डजंट मैच, योर रिस्क रिवॉर्ड्स गेट evaporated through the higher range. When it comes to a higher range, you will get into a panic stage में आके direction right रेखे भी you will exit in negative. To get rid of that, the only one thing that you guys have to follow is patientfully wait till the setup is created. This is for everyone, not for one particular person. Okay. And all the members of December batch LTD sessions will start from 3rd. Can we take this consideration of change in character? कुछ भी मत बोलो तुम। चेंज इन कैरेक्टर होने के लिए कोच तो क्रिएट होने दो, कन्वर्जन मैप करने के लिए। कौन सा पॉइंट कहाँ से लेके कहाँ पे मैप करते हो आप? सस्टेन होने दो। अगर सस्टेन होगा, देन रूल्स इज सिंपल। सस्टेन नहीं होगा तो रूल्स को लेके क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, सस्टेनिंग। आउट ऑफ 10 ट्रेड्स बैठते ही कितना ट्रेड्स डायरेक्शन में जाता है? बैठते ही बड़ा कैंडल जो क्रिएट होता है 3-4 बार होता है 10 में से। डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो हर एक ट्रेड डायरेक्शन में जाता है, ज्यादा से हमें ट्रेड। सो ये जो मूवमेंट्स है ना, आगे जैसे कि ओके, एग्जीक्यूशन हुआ इंटैक्ट के साथ कंटिन्यूटी में, फट फट फट, वैसा 3 बार होती है बस। नहीं तो क्या करेगा? 1 2 3। ओके, सेटअप तो यहाँ पे बना, यहाँ पे एंट्री हुआ, मार्केट ग्रीन में दिखाएगा थोड़ा देर, उसके बाद मार्केट फिर से आएगा, ब्रेक इवन में दिखाएगा, उसके बाद कंटिन्यूटी करेगा। बाय गॉड ग्रेस एसएल बहुत कम लेता है। So in pursuance, the last SL given was 8 months back.
हाँ, 8 months back is for daily red closure. Yeah. छोटा मोटा एसएल तो जाता रहता, बट डे क्लोजर ग्रीन होना चाहिए. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. हाउ मेनी ट्रेड्स डू यू एग्जीक्यूट? डिपेंड्स. अगर स्विंग ट्रेड है तो एड ऑन्स चलता है. अगर आईडी ट्रेड है तो 3 ट्रेड. रूल्स में कोई चेंज नहीं है. मेरे को भी सेम रूल ही है, आपको भी सेम रूल ही है. अगर वॉल्यूम के साथ इंडिकेशन दे रहा है मार्केट की, लाइक ओके चलो आज बड़ा मूव करता है, देन थोड़ा सा ग्रीड दिखा के रैंडम एंट्रीज, मतलब सेटअप के साथ जो ओके अभी सप्लाई चल रहा है, सप्लाई के साथ डिमांड कंप्लीट हो गया, वहां पे डायरेक्ट एंट्री ले लेना. सो वो ग्रीड एंट्रीज ले लेता है थोड़ा बहुत. when we know that the market is giving more than 100 pips, do we look for MC2 followed by MC2? I mean, when 15 minutes long MC2 target is hit, then do we first look for retracement? This is taking retracement from golden ratio, no? Exact golden ratio allocation, right? आज के दिन का. So, short side before looking for long trade, so on. No, not every trade you can map, right? So major mapping is always in the directions. TTS 2.0 जो map होता है ना, so direction mapping कर लो. And अगर 1 hour का indication आपका 100 pips के पास है, right, retracement, या 150 pips के ऊपर है, तब जाके allocation देखना. Example Friday के दिन जो हुए थे, right, same scenario. नहीं नहीं 37 में हुआ है अगस्त. वो 35.730 वो वरुण का है, मेरा नहीं है. मेरा लास्ट कैंडल में हुआ, राइट. सो नीलेश, इन परसुवेंस ऑफ मार्केट बुलिश थी, बुलिश के साथ इमीडिएटली S2B1 सेटअप रिजेक्शन पॉइंट क्रिएट किया था. इंटरमीडिएट रेशियो एंड मिनिमलिटी अमाउंट 200% के पास यहाँ पे, राइट. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में यस डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ द अलोकेशन पर्सपेक्टिव्स. 1 2 3 अलोकेशन पॉइंट जो कि एग्जैक्ट एसएमई डेटा रिजेक्शन 1 जो लिया था, राइट. उसके बाद सेकंड अलोकेशन पॉइंट डिमांड 200% कंप्लीशन के लिए, सेम स्विंग हाई, सेम स्विंग लो, एंड रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो. वहां से फिर से गोल्डन रेशियो से ही रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में गया. ओके. So when the market tends to showcase you with a slower movements in a direction through iceberg, then yes, that should be your plan of action, nothing else. इतना स्लो है मूवमेंट, स्लो तो है. खुशी मना, पहली बार सही जगह पे एंट्री किया. उसी के लिए डायलॉग बाजी में कम नहीं है आप लोग. Stream will be there for next 10 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. Okay. नीलेश, एक ही दिन में सब डाउट्स क्लियर करवा लोगे? कल के लिए भी थोड़ा रख लियो. Boys on fire today. अच्छा है.
एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया नीलेश आपका? नहीं, क्या बात कर रहे हो अगस्त्या? तुम कब से 30 पिप में खुश हो रहे हो भाई? माइंडसेट चेंज कर लो. क्लोज सिस्टम फॉर 1 hour 2 hours, go meditate, come back. I'm totally okay if you miss this trade. 30 pips में खुश हो रहे हो यार? So whatever it is, doesn't matter. You're not built for that. So don't act like one. So act like one which you are built for. सस्टेन होना चाहिए. 24, सॉरी 4240 के ऊपर सस्टेन होता है तब मजा आएगा. ये देखो, रिटेलर्स 5 मिनट में कैसे ट्रैप हुए. एम पैटर्न के साथ अभी डब्ल्यू बन रहा है. So don't get in traps like this. So that's the reason 15 minutes is the best option. Ourselves, not fully, but still trying with small quantities. I'm not able to spread. Great. बूंद बूंद से सागर बनती है. ओई बूंद की पार्टी था ना. श्रीकांत, अगर सेटअप से ट्रेड में हो ना तो एमटीएसएल फॉलो कर लो. बहुत स्लो है मूवमेंट. The reason why I'm saying you is because you're following and executing the trades through funded account henceforth. Streaming will be there for next 8 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. Finally, pump candle. Okay. So one new thing, guys. So what is pumping?
राइट? ये कोई भी नहीं बताएगा। जब एक कैंडल फ्रिक्शन में रहता है ना, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट, एग्जाम्पल समझ लो, एक कैंडल अच्छा बना, दूसरा कैंडल अच्छा बना, उसके बाद मार्केट स्लो हो गई, राइट? वो स्लो होने के बाद एक कैंडल ऐसा आता है जहां पे बॉडी बन रही होती है, राइट? डायरेक्शन भी सेम ही रहता है, बट एक पॉइंट ऑफ एक्शन पे आके ना पंप होती है, मतलब मार्केट में वो बॉडी डायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करके लोअर विक रेंज को टच करके रिबाउंड होती है, राइट? So that is pumping mechanism in the markets, right? So what is pumping mechanism? So in that fluctuation, what happens? Everyone thinks that market is going to move in one certain direction, and जैसे ही वो लाल में आता है ना, सब शॉर्ट की तरफ बैठने के लिए देखते हैं, राइट? सो कभी भी जिस भी डायरेक्शन में हो ना, उस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना, पंप आता है, जैसे कि ये वाला कैंडल है, जैसे कि इस कैंडल में हुआ था, राइट? सेम सिनेरियो, most of the time, every start of the session you will see one pump candle, right? So in that pump candle, what happens? Direction will be in your preference, but market indicates you to sit in the opposite direction. So वो कभी नहीं करना चाहिए. So जिस डायरेक्शन में आप एनालिसिस किए उसी डायरेक्शन में रहना, वरना एसएल दे दोगे मार्केट. सिर्फ न्यू ईयर की पार्टी. अगर दिसंबर 20 तक जो हमारा रेगुलर टारगेट जो कंप्लीट होता है तो ओके. सस्टेन होने दो, बिना सस्टेन किए आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. हाँ, सिंपल है. सस्टेन होने दो, देखते हैं. कहाँ पे इंटरव्यू हुई सर? 37 पे. ये रेड कैंडल पे इंटरव्यू. डिस्ट्रीब्यूटेड एलोकेशन में आने दो, तब तक नो. सर निफ्टी का एलोकेशन प्लीज. सेम है, नो चेंजेस. एग्जैक्ट 200 हिट हुआ था. 200 कंप्लीट रिजेक्शन है हमारे पास 200 के पास. So this is the next plotting what we will be looking for. 100% rejection on surplus. So when there is 100% rejection on surplus, what is the next plan of action? Demand allocation. First come, first serve. Point of interest will be taken under the consideration over here. Sorry, my bad.
So this moment will be played a role at this point. Minimality M1 formed 150 200. Wick से क्यों ले रहे हैं? Because high wick range है. Okay. Market didn't sustain below 200%. So what is the next plan of action that you will be mapping out over here? Guys, right? So allocation 1, completion, change in character. Yes, definitely. First come first serve allocation. Point 1, change in break. Conversion allot करो. Conversion allot करने के बाद 100%, same range of 200% में ही है. No moment break. So post that conversion candle allocation 1, which will be taken under the play. Break and continue. Break and continue 200%. 200% rejection है. What is the next plan? Surplus. Surplus allocation 100%. Rejection played through. Circulating supply break gap up के साथ हुआ है. The allocation perspective will be taken under the consideration of mirroring, right? So mirroring allocation के साथ जाओगे तो first come first serve of the buying pressure will be allotted in the moment of the range activation M2 formation 150 and 200. Execution process will be very simple. Slot measurement आने दो, wick generate होने दो, continuity in the moment. How will you look for it? First come first serve demand, placement, market opening 100%, 150 allotment, right? This will be the plan of action for Nifty. Okay, beautiful gold. Sustain होने दो, 9 मिनट है अभी भी. Sustain होगा तब जाके मजा आएगा, वरना not interested. 150 allot होने दो पहला. Minimality M2 create हुआ है. M2 के साथ target is 200 and 150. 150 is matching with our intact level. So we are in the right direction, guys. Keep it up. So जितने भी लोग ट्रेड में हैं, MTSL फॉलो कर लो. सिर्फ वॉच डिस्ट्रीब्यूटेड अलोकेशन. नीलेश का भी वो डाउट है. Once you guys get 100% in executions, then we'll come to that, right? Distribution point of action को कैसे मैप करना है, allocation of distribution कैसे देखना है, right? Reallocation structure को कैसे identify करना है, that and all is next once you understand the proper execution pathway. Okay. लाइव में जो करने का मजा है वो किसमें है? ये तो कोई भी कर लेगा यार. एग्जीक्यूट करके बैठना होता है ना पेशेंसफुली, वो कोई नहीं कर पाएगा. थैंक यू. गुड आफ्टरनून पीटर. थैंक यू फॉर
90 pips running. This is very good to watch and listen to. You're welcome, Peter. Thank you. All the beginners, whichever strategy, whichever concept, whichever allocations, whichever formulations you guys are following, I don't care. Make sure 6 months of back testing is done on that. 6 months of forward testing is done on that. 1 month of live analysis. With 1 month of live analysis, come with a smaller capital. Deploy that capital, make it compounding. Sorry, with compounding, make it big, following a proper risk to reward. While following a proper risk to reward, make sure you don't carry fear, greed, and FOMO while executions. How do you control it? Through meditation, through reading, and through yoga. With that, it's your hard earned money. Make sure to learn before you earn and don't give the accounts to handlers nor execute the trades as per the tips. Learn because hard earned money can be built only when it's done by your psychology, your analysis, your growth, and your execution. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.